So hello guys, this is Sagnic and you're watching the Technovator where technology meets innovation. आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स चेक करने वाले हैं जो मैंने रिसेंटली मार्केट से खरीदा है फॉर सम अपकमिंग अमेजिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. Okay, so this is the box that I've taken to store all the components that I've bought. और ये जो components है ये मैंने खरीदा है चांदनी मार्केट कोलकाता से. तो बिना समय गवाए let's open this particular box and let's see what's inside. तो first of all this is an 8 array IR sensor जिसको हम line following robots या फिर maze solving robots बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और इसका उपयोग करके मैंने एक line following robot भी बनाया है जिसका वीडियो बहुत ही जल्द इस चैनल पे आने वाला है. सो stay tuned for that. और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ और कंपोनेंट्स के पास. तो यहाँ पर है कुछ रेगुलर जंपर वायर्स, फिर यहाँ पर है आपका SG90 सर्वो मोटर्स. सो दिस इज़ द SG90 सर्वो मोटर. ये एक 9 ग्राम का सर्वो है. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिपो बैटरी. इसका भी मैंने यूज़ किया हुआ है. दैट मीन्स दैट दिस इज ऑलरेडी अ यूज्ड पार्ट एंड नॉट अ ब्रांड न्यू वन. इसका कैपेसिटी है 2200 मिली एम्पियर. ये एक 3 सेल का बैटरी है. जैसे कि मेरे पास ये एक और बैटरी है, ये सेम बैटरी है पर इसका ऊपर का कवर मुझको यहाँ से हटाना पड़ा फॉर ऑब्वियस रीजन्स. तो इसके अंदर 3 सेल होते हैं. एक सेल है 3.7 वोल्ट्स का और ये कनेक्टेड है इन सीरीज. सो दैट मेक्स इट 11.1 वोल्ट. ये एक 30C का बैटरी है. मैं बहुत इन डेप्थ या फिर इन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने आने वाले दिनों में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं. और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर. तो ये भी एक लाइन फॉलोइंग सेंसर है. इसके दो सेंसर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू दिस वन. सो दैट मेक्स दिस सेंसर आइडियल फॉर फॉलोइंग लाइन लेस देन और इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स. और ये जो सेंसर है इसका उपयोग मेनली किया जाता है फॉर फॉलोइंग अ लिटिल बिट थिकर लाइन अबव 1.5 टू फॉर एग्जांपल से 3.5 सेंटीमीटर. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस मॉड्यूल के ऊपर. ये एक स्टेप अप स्टेप डाउन मॉड्यूल है और इसका मदद से मैं आने वाले दिनों में एक लैब बेंच पावर सप्लाई बनाने वाला हूँ. वेरिएबल पावर सप्लाई विच कैन रेंज फ्रॉम अ वोल्टेज ऑफ 1 to 20 वोल्ट्स. और इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास एक 8C SR04 का अल्ट्रासोनिक सेंसर. प्रीटी बेसिक. वी ऑल्सो डू हैव अ बंच ऑफ IR सेंसर्स. इसका यूज़ करके भी आप लाइन फॉलोइंग रोबोट्स बना सकते हो. इसको यूज़ करके मैंने एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीन बनाया है जिसका वीडियो आप अभी आई बटन पे देख सकते हो. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इन मोटर्स के पास. तो दीज मोटर्स आर बेसिकली मिनी स्टेपर मोटर्स. इसका उपयोग आप लोग CNC प्लॉटर में यूज़ कर सकते हो. आप प्रिसीशन कंट्रोल्ड रोबोट में यूज़ कर सकते हो. आप किसी भी प्रिसीशन कंट्रोल सिस्टम में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट्स एंड ऑल. और अगर आपको चाहिए थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल मोटर इन द स्टेपर मोटर रेंज, सो फॉर दैट वी हैव दिस नीमा 17 स्टेपर मोटर्स. इसके और इसके बीच का जो मेन डिफरेंस है दैट लाइज बिटवीन द टॉर्क एज वेल एज इन द एफिशिएंसी. सो इसका टॉर्क जो है इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है. और इसके साथ मैंने ऑफकोर्स इसका मोटर ड्राइवर भी खरीदा है जो कि है बेसिकली एक स्टेपर मोटर शील्ड जो कुछ इस तरह का दिखता है. ये जो शील्ड है बेसिकली ये एक आर्डुइनो ऊनो के ऊपर फिक्स हो जाता है और इसके ऊपर आप लोग लगा सकते हो A4988 motor driver जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ. ओके जस्ट अ मिनट. सो दिस इज द A4988 motor driver. सो इन मोटर ड्राइवर्स को आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हो एंड देन दिस एंटायर शील्ड विल बी माउंटेड ओवर एन आर्डुइनो ऊनो specifically. And in order to drive these small stepper motors, we also have motor drivers for that as well. That is this. This is the ULN 2003 motor driver. मैंने कुछ कंपोनेंट्स को पहले से ही खोल कर चेक किया हुआ है कि ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं. So this is the motor driver that we use for driving this particular motor. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ और कंपोनेंट्स के पास. तो यहाँ पर है एक रेगुलर पर्फ बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सॉल्डर करके कुछ सर्किट्स बना सकते हैं टू अप्लाई फॉर रोबोटिक पर्पसेस. यहाँ पर है मेरे पास एक OLED स्क्रीन जिसको हम कोई भी आर्डुइनो के साथ लगा के काम में ले सकते हैं एंड दिस वर्क्स ऑन द I2C प्रोटोकॉल. सो इस वीडियो में जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर आपको कोई भी कंपोनेंट्स के ऊपर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will be more than happy to answer your questions and doubts or make dedicated videos on it in future. और जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया कि I have purchased these stepper motors and I'm planning to make a CNC plotter or CNC machine with it. So I have of course purchased these threaded rods. This is the kind of threaded rod that we require for making CNC 2D और 3D plotter in general. आप इन rods के बजाय कुछ timing belts का भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी मैंने purchase किया है just in case I need to use them.
तो ये है वो टाइमिंग बेल्ट, मैंने लगभग 3 मीटर का खरीदा ये बेल्ट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ओके सो दीज आर प्रीटी बेसिक 7 सेगमेंट डिस्प्लेज। इसका उपयोग करके आप 7 सेगमेंट में कोई भी डिजिट या फिर कोई भी लेटर डिस्प्ले कर सकते हैं। You can solder it directly to the perf board and then make use of it using some integrated circuits or even Arduino in general. Okay, so we have something very tiny in our kit that is N20 gear motors. तो gear motors तो मैंने बहुत सारा यूज़ किया है, starting from square gear to BO motors, but these motors in general are very small, very powerful for their size. मतलब ये जो gear motor है इसका जो टॉर्क है वो बहुत भयंकर है अगर आप कंपेयर करोगे इसी साइज का कुछ और मोटर्स के साथ। तो ये जो N20 मोटर है ये 100 आरपीएम का है और इसका उपयोग करके मैं एक मिनी आरसी टैंक बनाने का प्लान कर रहा हूँ, विच विल बी कंप्लीटली 3D प्रिंटेड। सो दैट इज अ टॉपिक ऑफ द फ्यूचर एंड इन ऑर्डर टू ड्राइव द रोबोट विद दीज मोटर्स I have these two wheels. These are wheels compatible with the N20 gear motor. Okay, let me focus it a little bit. Yeah. So these are the wheels that I've purchased. Along with this, we do have this tiny component. So this is nothing but a basic IR pulse sensor which is used for sensing pulses. इसका उपयोग करके हम pulse sensing device बना सकते हैं, इसका उपयोग करके हम बहुत सारे interesting projects बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं joystick modules के ऊपर। So these are the joystick modules. Using this we can make some amazing remote controllers that can be wired or wireless, can be controlled by Arduino, may not be controlled by Arduino. We can create a lot of controlled projects with these things. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, okay, so these are basically just Arduino Nanos and there is nothing to say about this. हम सबको पता है कि ये कितना compact, lightweight, power efficient और बहुत user friendly होते हैं in general, specifically speaking of robotics and mechatronics projects. Just as I showed you guys that I have bought the stepper motors, I have bought the timing belts, I have bought the threaded rods as well. So I need something to couple these things, I need something to fix these things. In general, I do need some other mechanical assemblies. So for that I have bought a few things. So these are basically couplers and these are used to couple the threaded rods with the NEMA 17 stepper motor, and these can be secured by using these two nuts which will be driven by Allen keys. Okay, so this is the kind of pulley that we use for driving the timing belt using the NEMA 17 stepper motor. तो इसका भी मैंने परचेज किया हुआ है and I do not know the exact name of these brass thingies, but they do have threaded inserts in them and these are used to basically make platforms which will move in the X or in the Y axis using these particular threaded rods, because they go into the threaded rod like this and once we rotate it keeps on moving. So if it is like this, it will be moving in the x-axis of course, and like this in the y-axis. And the last mechanical assembly that we have for implementing in the stepper motors are these pulleys. I have purchased 2 pulleys and these are purchased in order to give support to the other end of the threaded rod, because अगर आप threaded rod के साथ stepper motor को एक side पे लगाते हो, so there should be something which will be supporting the other side so that the other side of the motor doesn't hang out due to its weight. So for that I have purchased these small bearings. Coming to the other components, I do have a basic 500 milliampere 12 volt transformer for a project, or specifically a retro project that I will be working on shortly. उसका भी अपडेट्स आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, so stay tuned for that. I will also be working on an RC aeroplane. For that I have purchased one BLDC motor and one 30 ampere ESC. And what else do we have? So we do have this very small MX1508 motor driver. So this is the MX1508 motor driver and I will be controlling the N20 motors with this. Last but not the least, we do have a few other electrical components along with 2 transceiver modules, specifically speaking of the NRF 24L01 transceiver modules along with its antennas. So this is basically the antenna version. We do have 2 versions of this in the market. One is with antenna, which comes with a secure range of about 300 to 500 meters if I'm not wrong, and I am doubtful about the range of the non-antenna version. So I found this to be much more secure and a reliable option for creating some radio communication with my project, and that's why I bought these things. So along with this, we do have a few rectifying diodes, we do have some female header pins, we do have some male header pins, we have a DC 12 volt jack, and this is the same jack that we use to power Arduino as well. We do have some smoothing capacitors, a few limit switches, and a 5 volt voltage regulator. Not to mention the bunch of connecting wires that I've bought
in order to solder and connect all the components into the perf board. So this was the list of all the components that I have bought in order to make some amazing projects on which I will be updating you guys very soon through videos, through tutorials and whatnot. So definitely stay tuned for that. So that was it for this video. Hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to click the like button, subscribe to this channel and push the bell notifications so that you can get instant updates whenever I upload a new video. Signing off, Sagnic Basu from the Technovator.